खुद टेररिज्म कोर्ट से जज साहब से उसने कॉल भी की, उसे रिटन ऑर्डर दिए, उसने फेंक दिया। ये हालात है पाकिस्तान में जनाब स्पीकर। यहां पे फिर कहते हैं कि जी इन्वेस्टमेंट आएगी। कौन सी इन्वेस्टमेंट आएगी जनाब स्पीकर? जब यहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो क्या होगा? यहां पे कल मैं 10,000 का मोटरसाइकिल चुराया है। ये सितम जरीफी देखें, ये हालात देखें। ये किसी के ऊपर चौधरी शुजात हुसैन साहब के टाइम पे उन पे भैंस चोरी का मुकदमा लगा था। आजकल किसी पे मोबाइल चोरी का लग रहा है, मोटरसाइकिल चोरी लग रहा है। एक दूसरा लगा है कि जी हमने पुलिस के दस्ताने चोरी। अयूब ने 35,000 या 40,000 का मोटरसाइकिल चुराया है। ये सितम जरीफी देखें, ये हालात देखें। ये किसी के ऊपर चौधरी शुजात हुसैन साहब के टाइम पे उन पे भैंस चोरी का मुकदमा लगा था। आजकल किसी पे मोबाइल चोरी का लग रहा है, मोटरसाइकिल चोरी लग रहा है। एक दूसरा लगा है कि जी हमने पुलिस के दस्ताने चोरी किया। भाई हमने करना क्या है? आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया जी सर। रूलिंग दे इसमें जी एक जो ये इंसिडेंट हुआ है, इसमें हम सार्जेंट एट आर्म्स, आप सुन लें, आप चेयर बोल रहे हैं, आप सुन लें प्लीज। तशरीफ रखें भाई, शुक्रिया। हम इस पे आपके उमर अयूब साहब ने, सर ऑनरेबल खोसा साहब, इससे गुजारिश है, अभी जो उन्होंने फरमाया मैं उसका थोड़ा सा आपको बता दूं कि क्या हम करने लगे हैं, तो शुक्रिया। हम सार्जेंट एट आर्म्स को इसकी इंक्वायरी देते हैं और वो फिर हाउस के सामने रखेंगे कि आपके साथ जो ऑनरेबल मेंबर्स के साथ गेट पे जो इंसिडेंट हुआ है। और दूसरा, आपने बहुत सारे, उनको 3 दिन दे देते हैं, हमारा सेशन वैसे होने वाला है। सेशन तशरीफ रखें। और दूसरे जो आपने मामलात बताए वो हैं होम डिपार्टमेंट पंजाब के साथ, तो वो हमारा डोमेन उसमें नहीं लगता। और ऊपर से आप कोर्ट में भी जो हैं ये इश्यूज टेकन अप हैं, तो होपफुली देयर विल बी सम आंसर फ्रॉम द कोर्ट। बैरिस्टर गौर साहब का खोलें 1 मिनट के लिए प्लीज। बैरिस्टर गौर साहब का खोलें जी, आप बैठें। जनाब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं इस बात की ज़रूर वजाहत करूं कि इनकी तरफ से हमारे साथ कोई डिस्कशन नहीं हुई, न मेरे साथ, न मेरे पार्टी के बाकी मेंबरान साहिबान के साथ, न हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ, न ही डोगर साहब के साथ। और इनका जो रेजोल्यूशन है वो एब्सोल्युटली हमारे तरफ से अप्रूव नहीं है, नहीं ये यूनानिमस। चलें आगे। थैंक यू जी। सरदार लतीफ खोता साहब। Mr. Speaker, let me first of all welcome the students who have come from the United States of America. We welcome them here, and we also invite them to see the vibrant democracy that we see in this house. Sir, you are the custodian of the house, and we have recently taken oath of preserving and protecting the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. So that envisages, whereas we are very happy that the Supreme Court has finally given a verdict saying that the Bhutto's trial was a mistrial. But I hope it had not taken 44 years to arrive at the conclusion. We also beseech through you that even now another heartthrob Prime Minister of Pakistan, Mr. Imran Khan, is languishing in the jail. The people gave their verdict on the 8th of February 2024, saying that Imran Khan and his party was massively voted. So let us not take 45 years. Let us not take 45 years to arrive at the conclusion that the 9th of May Hevam and the 9th of February, they were all some type of a conspiracy again to eliminate another heartthrob Prime Minister from the people of Pakistan. Let us have a commission, whether from this house or the August Supreme Court of Pakistan. Let them form a highest judicial commission to see whether the 9th of May was an orchestrated move to disintegrate Imran Khan and his political party. And then we saw on the 8th of February people massively rejecting the 9th of May version.
They rejected the convictions imposed upon Imran Khan. They rejected his incarceration. The people of Pakistan rejected the judgments also whereby the symbol bat was taken away from the Pakistan People's Party. Sir, I said it on the face of the Supreme Court. Right in the court I said, this is killing democracy. For God's sake, this would be considered and reckoned as one of the blackest judgments in the history of Pakistan. And I say it once again before this House, August House. Let us preserve the sanctity of this House. Let this House be sovereign and supreme. Let it be the voice of the people of Pakistan, the genuine elected members who have been elected by the people of Pakistan on the 8th of February 2024. Let us give ownership to the people of Pakistan. There are 10 million Pakistanis living abroad and their hearts throb in Pakistan. Believe you me, sir, if we give ownership to the people of Pakistan, we will not have to go to the IMF at all. They will retrieve all the debts of Pakistan. So therefore, let's not forget that the Parliament is sovereign and supreme and the Constitution must prevail. Sir, on the 10th of this month, on Sunday, I was standing in my vehicle right outside the Kent courts, and we were waiting for the caravan to arrive because we were to carry a very peaceful demonstration. And suddenly an SHO comes and knocks on my door of the car, and he said, "Sir, come out." I said, "Do you have a warrant of arrest? Do you have any FIR against me? I am a member of the National Assembly, and do you have the Speaker's permission to arrest me?" शुक्रिया। Then he called the DSP, sir. The DSP, Rana. खोसा साहब, अब ये हाउस हमने, मैं आपको हाउस को गोश गुजार कर दूं कि ये हाउस हमने इलेक्शन कमीशन को हैंड ओवर करना है कल की इलेक्शन के लिए। इफ्तार से पहले उनको हैंड ओवर करना है। अगर काइंडली आप बोल लें, बिकॉज हमारे पुलैन बलोच साहब भी पार्लियामानी लीडर हैं, वो भी बोलना चाह रहे हैं 3 दिनों से, मैं उनको भी मौका देना चाह रहा हूं। और मैं गुजारिश सुन लें सर, मैं ये समझता हूं कि ऑपोजिशन के पास बोलने के अलावा कुछ नहीं है। मैं इसमें यकीन रखता हूं गवर्नमेंट के पास एक्शन लेने को है और ऑपोजिशन के पास बोलने का मैं पूरा मौका दूंगा। मगर आप ये भी हमने एजेंट करना है सर। मैं आप चाह रहा हूं आप वाइंड अप करें तो मैं एजेंट करूं। मैं चाह रहा हूं आप वाइंड अप करें तो मैं एजेंट करूं। आप किस तरह कह रहे हैं कि आपके पास बोलने के सिवा कुछ नहीं है? सर प्लीज ये तौहीन ना करें ऑपोजिशन की। नहीं सर, ये कहकर तौहीन ना करें। All respect for the opposition. What I am trying to say is they should get the maximum time. Do you disagree with that? आप ये ना कहें कि ऑपोजिशन के पास कुछ नहीं है। हमारे पास लोगों की करोड़ों पाकिस्तानियों की हमारे पास है। तो इसलिए सर ये देखें कि अगर आईन में अगर आपको पुरअमन एहतजाज करने का हक, आर्टिकल देखिए 4 है जो कहता है कि कानून में आपको हर हक है। आर्टिकल 9 है राइट ऑफ लाइफ, आर्टिकल 10A है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 है डिग्निटी, आर्टिकल 15 है राइट ऑफ मूवमेंट, आर्टिकल 16 है राइट ऑफ एक्सप्रेशन, आर्टिकल 17 है राइट ऑफ एसोसिएशन। तो प्रिविलेज मोशन तो आ गया ना सर आपका? सर ये तमाम चीजें तमाम चीजें मुनहदिम की गई हैं और आपके 10 मार्च को इस पाकिस्तान सारे को एक जेल खाना बना के रख दिया। क्या ये पुलिस स्टेट है? क्या यहाँ बुनियादी हकूक ख़त्म हो गए हैं? क्या इंसानी हकूक से हम आरी हैं? क्या पाकिस्तान में